My name is Amit Kumar Pal और मैं करेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के थर्ड ईयर में हूँ एंड मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन अराउंड 2019 में स्टार्ट की थी एंड मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन वहीं से ही की हुई थी एंड if I speak about my JEE rank, so my JEE rank was around 2724, and that made me to land here in IIT Kharagpur. So yeah, that's about my introduction part. Basically, it was my sister who motivated me for the IIT JEE. So by the class 10th, I had no much understanding of IIT. So basically, मेरी sister ने बोला कि this is a field where you would find to explore a lot about engineering and brainstormings, and this would help you to develop a lot. So this was a kind of motivation for me, and I thought if this is something that would help me to develop all around, and this would help me to make my brain more strong, and I would get a chance to learn at some premier institute, and I'd be doing my studies and my research work instead of some best brain of the country. So ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होगी, तो मुझे इस फील्ड को ट्राई करना चाहिए एंड मुझे ऑलरेडी मैथ्स एंड फिजिक्स में इंटरेस्ट था क्लास 10 से, तो दिस वाज द बेसिक मोटिवेशन फॉर जेई। डेफिनेटली मैंने अपने सेल्फ साइड से तो नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और किस स्ट्रेटेजी को चाहिए। सो दैट वाज नॉट माय कंप्लीट ओन स्किल्स, बट मैंने बेसिकली अपने कुछ टीचर्स से, स्कूल टीचर्स से बात की जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड में स्टूडेंट्स को पहले ट्रेन किया हुआ था, तो उन्हें बेसिकली एक्सपीरियंस था कि किस स्किल सेट की ज़रूरत होती, किस स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती। तो they were basically the basic steps for me to prepare for my JEE and strategies. So they guided me through the whole journey, how to start your preparation and what it takes to finally get into IT. So yeah, those were my teachers who motivated me for the JEE. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेंज आता है कि सडनली आपका सिलेबस चेंज हो जाता है, कि क्लास 10th में आपका कुछ लिमिटेड सिलेबस होता है, बट सडनली आप जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एक बहुत वास्ट सिलेबस आ जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं होती। तो बेसिकली आपको कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए कि किन टॉपिक्स को आपको सेलेक्ट करना है, किन टॉपिक्स को रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने तो अपने कुछ सीनियर से बात की हुई थी जिन्होंने पहले ही जिन्होंने पहले ही जेई के लिए प्रिपरेशन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि क्या तुझे पढ़ना चाहिए, क्या तुझे स्किप करना चाहिए एंड कैसी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। सो मुझे भी ये चैलेंज लगा था, ऑल ऑफ सडन क्वेश्चंस का लेवल हाई हो गया था, टॉपिक्स कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए एंड तुम्हें रटने से ज़्यादा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो इन सबको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एंड ये स्किल्स बेसिकली तभी आ सकती है जब आप डेफिनेटली उस पर काम करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम दोगे एंड जो आपकी कमियां हैं उस पे आप मेहनत करोगे, उसे इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट डे अगेन कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फिर आप उन पे काम करोगे। तो ये डेफिनेटली कुछ टाइम का प्रोसेस होता है। अराउंड मुझे कुछ 4 to 5 मंथ लगा कि मैं अपने क्लास 10th से जेई लेवल वाली प्रिपरेशन पे आ पाऊँ कि किस स्ट्रेटजी को मुझे फॉलो करना है। सो ये मेरे चैलेंजेस थे कि ऑल ऑफ सडन क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती थी, बट मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, देन सडनली लेवल अप किया एंड कुछ अदर रिसोर्सेज से क्वेश्चंस देखे। तो those were my helping point that helped me to understand how can I serve my skills more. So yeah, that helped me. या सो इट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन बिकॉज जब जेई प्रिपरेशन आप करने जाते हैं तो ऑल ऑफ सडन आपके पास बहुत ही लोग अनलिमिटेड रिसोर्सेज रख देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आपके सामने ले आते हैं। तो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स उसमें एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट आई वुड से दिस इज द foremost थिंग दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। एनसीईआरटी इज योर बेसिक स्टेप्स एंड
NCERT is something that covers almost everything in more concise way and in a limited ways. बहुत सी बुक्स में क्या होता है कि पता नहीं कौन कौन सा सिलेबस डाल देते हैं जो कि जिसकी कुछ वैल्यू भी नहीं होती और उसमें अपने को ही डिस्ट्रैक्ट होता है। फाइनली हम जो एग्जाम में पूछे जाना है उससे हट के हम किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है। तो एनसीईआरटी बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट है। एक जितनी थ्योरी आपको चाहिए, जितनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट उसमें क्लियर की गई है। एंड फाइनली द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट। It starts from very basic and it goes to very advanced. Means it covers the complete range of questions. It might be possible that you might not get the intuition of JEE advanced question, but you will get the feel that what are the questions that actually asked in those competitive programs. So NCERT basically contains that. So मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इनिशियल स्टेज में आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज एक तो इजी है एंड कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड उसमें बेसिकली कंटेंट को बहुत ही कंसाइज रखा गया है जो कि आपके लिए सिर्फ वैल्यूबल है, कुछ बहुत ही गार्बेज नहीं भरा गया है। एंड फाइनली उसके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक्सरसाइज के एंड में होते हैं, जो कि बेसिकली स्कूल लेवल पे आपको नहीं पूछे जाते, बट डेफिनेटली वांट टू if you want to enhance your skills of problem solving, then you can try those problems that would definitely help you. And basically, if I tell about physics, chemistry, and math, so NCERT for the physics is one of the most recommended books, because till the end of the JEE Advanced, NCERT of NCERT chemistry would help you, because uh, hardly I would say, because hardly they ask any question apart from the NCERT. Even in a JEE Advanced, they ask some question directly from the JEE NCERT. So NCERT is one of the best thing for the physics and chemistry for sure. So yeah, that I would say for the NCERT. So मैं पहली चीज तो यही बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, जो कि मतलब आपका रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट हो जाता है। एंड बेसिकली मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे कि मुझे टीचर्स ने भी बोला था कि अगर तेरी फिजिक्स बहुत ही अच्छी है तो एक बहुत ही अच्छा रैंक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो हमारे अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा अगर स्कोर कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा रैंक डिफरेंस आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत सी सिर्फ ट्रिक्स सीख लेते हैं, बट जे एडवांस में मोर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो उसमें बहुत से लोग को प्रॉब्लम होती है करने में। बट अगर आप बेसिक से स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली आप उन प्रॉब्लम्स को करके लोगों से बहुत ही अलग हो जाओगे। सो दिस इज द थिंग। एंड इफ आई स्पीक अबाउट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड सो ऑन, सो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बहुत सी ट्रिक्स बताई जाती है कि इस क्वेश्चन पे ये ट्रिक का यूज करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। So it is okay. It will save your time, but I would recommend not use the trick every time, because sometimes the small change in the question might fail your trick and you might end up losing your marks. But I would say in the beginning, instead of solving more questions using the tricks, you should solve from the basic and writing each and every step, and getting to the derivation, and finally getting to the answer, because this should help you to analyze if there is any change in the question. How can you change your method? And if you solve by the trick, you might get the answer, but it would change. It would finally it might get wrong if there is any slight change in a question. So I would say rather than solving too much questions, you should start from the basics. So I started from the NCERT, and after that I solved the HCRM, because HCRM is one of the best book for JEE Advanced, because uh, this covers some of very hard concept in a very easy way, and exercise of SCRMI is really best, because it covers some practical based questions, and JEE Advanced basically asks you questions that relate with some practical experiences, so you would get the idea how to solve those questions also. So I basically pursued NCERT and then HCRMA book, and after that, to cover some more theoretical part and some more advanced concept, I also use Singlish, because
it had some good theoretical concept and some good problem sets. So yeah, that was the core physics. केमिस्ट्री बेसिकली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक इजी सब्जेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ रट लो, हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली बहुत लोग अच्छा स्कोर कर भी ले जाते हैं, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में डिवाइडेड होती है। एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेसिकली आपको रीड करना होता है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न रखना होता है। एंड फिजिकल थोड़ी मैथमेटिकल होती है, तो फिजिकल में आपको थोड़ा मैथमेटिक्स करनी होती है। But if I speak about inorganic and organic chemistry, so I would say again NCERT is the best thing, because as I already said, if you are pursuing NCERT, then go for the chemistry, because uh, whatever syllabus JEE Advanced has, it is basically covered in the NCERT, and it basically covers all the things. If you speak about organic chemistry, so there are some chapters that NCERT covers really best, from the basic to the finally application of organic chemistry. And some reaction parts, how the reaction moves, and mechanism of reaction, those all are covered in really good way. So that is for the chemistry. And if you want more theory and more application and more problem solving, then uh, I solved some P. Bahadur book that had some good problems for the physical chemistry. And for NCR, for inorganic and organic preparation material, my teacher gave me some materials, and those were concise, and those basically contained some good stuff to solve problem for the JEE Advanced. So that was the thing. And again, I would say chemistry, for chemistry NCERT is the best. You can try that, and this would bring you up to the end of the JEE Advanced. Yeah. So if I come to the mathematics, then this is a bit hard part of JEE Advanced, because mathematics के क्वेश्चन इतने लेंदी हो जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स से देख के डर जाते हैं और फाइनली उसे अप्रोच भी नहीं करते। बट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को रीड प्रॉपरली करना होता है, बिकॉज हो सकता है कि एक दो स्टेप्स के बाद आप कुछ डिराइव करके रिजल्ट निकालोगे, और वो रिजल्ट क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा। तो ये एक बेसिक ट्रिक होती है जो मुझे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पता चली थी। एंड मेरे टीचर्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि प्रॉब्लम देके घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का ट्रिक होता है कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना प्रॉब्लम से। सो इस चीज को आपको याद रखना है। एंड मैथमेटिक्स के लिए आई वुड से देयर इज अ वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस lot and lot, whatever you can, just do that, because there is no limit in the mathematics. Whatever they can frame question any type, and they can take a topic any type. There are some topics like permutation, combination, probabilities, and again there are some topics in the geometry like circle, parabola. There is no limit of questions. You might never complete those topics, but there is a one thing, that is just just grab just grab some basic understanding of those topics, and then solve as much as problem you can. And one more thing, I would say, solve some advanced level of problems, because mathematics is a part where they advanced ask any limit of questions. They may ask some really tough questions, and they might also ask some basic questions. So this is only possible, you can solve those questions only if you have practiced all set of questions. And if I speak about references, then there are some books. Singhage is, I followed the Singhage, and it was really good, because उसमें theory cover करके almost all types के questions थे। तो आपको basically हर type के questions का exposure मिलेगा। And again मैंने जेई मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जेई एडवांस के आर्काइव, वो रियली बेस्ट है। बिकॉज जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स रिलेटेड, वो बेसिकली किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। वो उसका अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिल सकती है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन क्रिएट करते टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना सीखोगे। एंड
ट्राई करना है कि टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को ट्राई करना है, एंड ज़्यादा लेंदी स्ट्रेच नहीं करना है। एंड मैथमेटिक्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रिक्स काम नहीं करती, तो बेसिकली आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। सो या दैट्स फॉर मैथमेटिक्स। If I come to the JEE Advance, so I would say one thing, basically JEE Advance का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि जेई मेंस की तरह किसी भी टॉपिक से पूछ लेंगे। जेई एडवांस में बहुत से टॉपिक्स को फिल्टर कर दिया जाता है जो कि रेलिवेंट नहीं है, एंड बेसिकली जेई एडवांस में कुछ ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है। So if I say about physics, then rotational motion is something that my teacher also posed, that it would be a lot of question would be asked from the rotational motion. So you have to just figure out what are the topics that you have to focus more, because there are some topics that JEE Advance asks almost every year. Whatever be the year, they will ask questions surely. So you have to firstly strengthen those topics at first. And if I talk about problem solving strategy, then there is a major difference between JEE Mains and JEE Advance. So in JEE Mains, basically some questions are directly tick based, so you can just read the question and tick the answer. But in JEE Advanced, this is not the case. Basically, there are a lot of tricks involved, and examiner just want you to read the question thoroughly. And if you don't read the question thoroughly, then there are more chances that you might end up understanding the question in a wrong way, and you might be wasting your time to solve the question in a wrong direction, and you might not even get your answer. So the one thing for the J advance is that you just stay calm, read the question thoroughly, and write down what are the conclusions that you draw from the question, and then move to the solution. And there is another difference, that is the type of questions. Since J advance ask question almost all the types, multiple choice question, fill in the blanks type questions, and even integer-based questions. So I would say, instead of solving the question by hit and trail method, it would be more better if you solve the question more conceptually, and basically asking question to the yourself, that why this step comes after this, why not another step can be used, and why this thing is being used in this question. So if you ask question to the yourself, then only you will get understanding why I need to solve the question by this method. So this is the basic for the JEE Advanced. Basically, if I summarize my whole discussion for the JEE Advanced, I would say better focus more on your concepts and your question solving speed. That would help you in a JEE Advanced, because uh, a lot of tricks and short method doesn't work in a JEE Advanced. It's your concept and your practice that would work in a JEE Advanced. डेफिनेटली क्लास 12 में आप पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा जाता है, बोर्ड का प्रेशर होता है, एंड साथ में 12th के न्यू टॉपिक्स आ रहे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स उसमें क्लास 11 का टॉपिक मिस कर देते हैं, एंड फाइनली याद भी नहीं रहता 11th में हमने पढ़ा क्या था। तो ये एक चीज आपको अवॉइड करनी है। एंड सो बेसिकली इफ आई टेल अबाउट स्ट्रेटजीज हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर, सो मैंने बेसिकली ये किया हुआ था कि बेसिकली 12th में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें 11th का भी यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रो टॉपिक होता था क्लास 12 का, उसमें बेसिकली क्लास 11th की मैकेनिक्स भी यूज होती है। तो ये टॉपिक जो कि इंटरलिंक्ड टॉपिक होते हैं, तो इन टॉपिक्स में बेसिकली आपका रिवीजन होता रहता है। साथ में जैसे जैसे 12th भी मूव होता है, तो आप 11th के टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज करते जाते हो। सिमिलरली कुछ टॉपिक जैसे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एंड क्लास 12 का प्रोबेबिलिटीज, ये दोनों इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हो गए, तो इनमें आपके 11th एंड 12th दोनों के टॉपिक्स साथ में कवर होते रहते हैं। सो ये टॉपिक्स बेसिकली आपको रिवाइज रहते हैं, बट देर आर सम टॉपिक्स दैट आर completely not coinciding. So I would say there is a one strategy for that, that on a weekends you try to give 5 to 6 hours to your previous topics that you studied in a class 11th. Uh, it might not be easy to follow the same strategies throughout the year, but somehow you have to make this thing in your habit, that you don't forget to revise the topics of class 11 at least once in a week, because
a lot of the syllabus is really big, and if you think that I cover the class 11 syllabus at first, and then I'll cover class 12 first, then again I'll revise class 11, then again I'll revise class 12, then this thing is not going to happen because you have just limited time, so you'll have to cover whole you just have to cover the two syllabus at the same time. So this is only possible if you अगर आप बेसिकली वीकेंड्स पे टाइम निकाल के करोगे। तो मैंने बेसिकली ये किया हुआ था कि वीकेंड्स पे मैं कुछ टाइम अपने क्लास 11 के प्रीवियस टॉपिक्स को देता था, एंड उन टॉपिक्स पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था, तो उससे उसका कॉन्सेप्ट भी याद हो जाता था, एंड अगर कुछ मैं भूल गया होता था तो अगेन उन्हें मैं अपने नोट्स से देख लेता था, तो बेसिकली वो याद हो जाता था। तो so this was the strategy I would say. Basically just keep on revising your syllabus of class 11th at least once in a week. So yeah, that I would say. Yeah, so if I speak about time management, तो मैंने बेसिकली अगर मैं अपना डायरेक्ट टाइम स्ट्रेटजी बताऊं तो मेरा फिजिक्स स्ट्रांग था, उसके बाद केमिस्ट्री था, अगेन उसके बाद मैथ्स था। तो जो मैंने फाइनल एग्जाम में टाइम स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो मैंने ये किया हुआ था कि मैंने 30 मिनट कुछ केमिस्ट्री को दिया था, देन अराउंड 1 आवर मैंने दिया था कुछ फिजिक्स को, देन 1 आवर मैथमेटिक्स को दिया था, एंड जो रिमेनिंग 30 मिनट्स बचा था उसमें बेसिकली मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को रिवाइज किया था कि अगेन मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ या नहीं। सो आई वुड से firstly figure out your strength because every student has their own strength. Some might be a better in mathematics, some might be better in physics, some might be better in chemistry. So but there's a one set that everyone follow, that chemistry is a bit easy part, so like everyone try to complete the chemistry part in some quick way. So I would say at least revise your chemistry part in a better way, because if you learn a lot in a chemistry, this would really help you to solve the question directly without wasting your much time. Okay, so this thing is for the chemistry, and for mathematics and physics, I would say start firstly try to analyze the question paper, because it might be possible some really tough questions are in the beginning and some easy questions are in the last. So you might end up wasting your time and skipping the question that you could complete. So I would say better firstly analyze your question paper, and then try to solve the question that you can at least solve correctly. And again, I would say analyze your own strength of what are the topics you are good at, and solve those topics at first. And for the time management, the best thing is to practice as much as you can. Few more mock tests in a time frame. Basically, for the last 2 months of my JEE Advance, I almost gave a mock test almost every once in a week. So this is the thing. The more you can practice, the more you'll understand about your strength and weakness. So practice is the only thing that can help you to manage your time, and I would say you don't have to cover everything for the JEE Advanced, but at least give some time to those topics that are really important for the JEE Advanced, because like some topics in a physics and some topics in a mathematics like geometry, permutation and combination, and in a physics like rotational motion and electrostatic magnetism, these are really important topics. So you should spend more time on those topics, because there are more chances that question will be asked from those topics. So I would say in this way, in a strategic manner, you should manage your time by analyzing what are the prior things you have to do and what are the less important things you have to do for the JEE Advance. So yeah. जेई एडवांस एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है। आपको वो क्लासेस भी कर रहे होते हैं तो उसमें आपको 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ना होता है, देन अगेन आप अपने रूम पे आके लगातार पढ़ते हो, तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे। एंड कंटिन्यूअसली करोगे तो आपका फोकस भी उतना बेटर नहीं रहेगा, एंड
You might be really frustrated that I don't want to solve those questions anymore. So definitely you should try some more activities that can at least maintain your energy level. And yeah, so मैंने क्या किया हुआ था बेसिकली, मैं कुछ टाइम के लिए बैडमिंटन खेलता था इवनिंग में, बेसिकली 30 या 45 मिनट्स के लिए। तो yeah, that was really a best for me because this would refresh me again for the next study round. So I would recommend you to at least pursue some hobbies that you also try on a daily basis, because studying for 12 to 14 hours daily regularly without doing anything is not actually a good thing, and this would actually won't make you a productive. You would be sitting in front of your books, but you won't be solving any productive things. So basically trying any extracurricular activities definitely help you to recover your energy level and start those things again with full enthusiasm. So first thing I would say, follow some hobby. You might play some instrument, or you might listen some music, or you might go outside on walk with your friends, and you might also sit with your parents and discuss with them about your preparation. And you might also call to your friends or your teachers regarding discussing about your preparation. So these are the small things that basically help you to refresh, and this will also help you to give some motivation for your studies. And one more thing I would say, at least follow your healthy diet, because this is really important. If you are not following your healthy diet, your body won't be favoring you for the preparation, so you would always be feeling dizzy and lazy. So yeah, I would definitely say this thing. And I would say please avoid using uh, social media apps in the study break, because this won't actually refresh you, but it will even wasting your time, and you might end up wasting your time more and more, because a lot of people prefer to use social media in free time. So this is not something productive, and I won't be recommending this thing. Yeah. डेफिनेटली आपको बहुत टाइम प्रेशर आ जाता है, और आप लो फील करते हैं जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते मॉक टेस्ट में, बट आपके फ्रेंड्स आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली लो फील होता है, मुझे भी फील होता था। तो I would say one thing that firstly, these tests are temporary tests, and these are not designed to like these won't give you any rank. But so instead of focusing much about result, you should focus on your performance in the test. And I would say uh, after completion of test, you should analyze your question paper कि मैंने क्या किया, क्या सही हुआ, कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता था, कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने चाहिए थे जिसने मेरा टाइम वेस्ट किया। सो आई वुड से मॉक टेस्ट इज मोर अबाउट एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस रादर देन केयरिंग अबाउट योर रिजल्ट। सो डेफिनेटली आप हमेशा बेटर नहीं परफॉर्म कर सकते, टॉप रैंक वन मॉक टेस्ट में हमेशा नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक्स आप वीक हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स में आपके फ्रेंड आपसे बेटर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे बेटर परफॉर्म करेंगे। सो I would say instead of getting stressed about low marks and low ranks, you should talk to your teacher and your those friend who scored good in a marks. Un, those students who scored good in those mock tests. So you should talk to them and understand about their strategies, what they did, and in this way you should change your basically you should change your working style with mock tests. So I would say mock test is more about gauging your performance rather than just stressing about your rank in the institute, uh, because the mock test is something that you are giving among your batch group, but J Advance is national level, so both results will be different. So instead of carrying the result, I would say better analyze your performance. सेल्फ स्टडीज करके स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा पहले आप कुछ टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन माइट नॉट बी अ रियली गुड थिंग, बिकॉज आपको उस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है और आप उसमें नए एंड से स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ स्ट्रेटजीज आप बेटर हो, बट
हो सकता है कुछ स्टडीज आप बेटर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. So I would say better you should ask your teacher and some of your seniors who has been into those field about the strategies that you should follow. So once आपको strategy मिल जाती है तो definitely there is a lot of content on the YouTube and on the internet that you can pursue to carry on your preparation. And बिकॉज ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. तो बेटर है कि आप अपने फ्रेंड से पूछ लो या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि उस अवेलेबल मटेरियल में क्या बेटर है आपके लिए. बिकॉज आप सब कुछ ट्राई नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में. आपको डेफिनेटली कुछ लिमिटेड चीजें ही करनी है. सो I would say if you are starting with a self-study, so better firstly collect up all the strategies and make your timetable that you would be doing on a daily basis and try to complete those things in a timetable manner and at least give mock test on a regular basis to at least analyze your performance that whether you are doing better or not. And apart from that, there are a lot of free materials and free tutors are available who are there to help you. So you can take their help and better improve yourself. So yeah, that is for the self study, I think. एक्चुअली मेरे से भी काफी मिस्टेक हुई थी जिसके बाद मुझे रिग्रेट भी हुआ कि हाँ उससे इम्प्रूव करके मुझे मार्क्स कुछ और अच्छे आ सकते थे. सो इफ आई टेल अबाउट देम, सो फर्स्टली मेरा ये था कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया था एग्जाम टाइम में. बिकॉज 6 आवर्स का आपका एग्जाम होता है 3 3 आवर्स करके. तो आप लगातार बैठते हो तो उसमें आपको स्ट्रेस हो सकता है और कई टाइम बीच में आप फील कर सकते हो कि अब मेरे से नहीं होगा या फिर बहुत लो फील कर सकते हो. सो आई वुड से एट दोस टाइम आप थोड़ा डीप ब्रेथ लो, अपने आप को काम रखो एंड दोबारा कुछ इजी क्वेश्चन ट्राई करो फाइंड करने का. क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम टाइम में जिससे आप डेफिनेटली कर सकते हो. तो मैं बोलूंगा कि आप उन क्वेश्चंस पे जाओ, उन क्वेश्चन को करो, उनमें स्कोर करके कुछ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो. एंड उन क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको कुछ और कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नए क्वेश्चन करने का. सो ये चीज थी जो मैंने एनालाइज की थी. एंड सेकंड थिंग ये थी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था जिस पे मुझे नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्वेश्चंस जो कि हो सकते थे वो छूट गए. एंड मुझे उसका रिग्रेट भी हुआ था कुछ टाइम कि हाँ मुझे वो करना चाहिए. सो अगेन जो मैंने आपसे बोला था कि आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए बने हैं जो कि आप कर सकते हो. क्योंकि बिकॉज आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते. कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग ही होते हैं. तो बेटर है कि आप उसकी जगह उन क्वेश्चन को ट्राई करो जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हो. एंड थर्ड थिंग यही है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत सी होती हैं. कुछ जगह पे आपको कुछ और लिखना होता है लेकिन आप कुछ और लिख देते हो. ये मेरे से मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत बार हुआ था. तो आई वुड से कि आप अपना बेसिकली हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली आप अच्छा रखो ताकि आप जो एटलीस्ट सोच रहे हो उसी को ही आप लिख रहे हो पेपर पे. बिकॉज ये बहुत सा होता है अपने स्ट्रेस टाइम में ऐसा हो सकता है. So these are some small mistakes that I felt during the examination that you should avoid. Yeah. If I tell about right time, there's no right time because some people start very early and some people start by class 11th and some people might even start in a class 12th and they still manage to crack it. So it's all up to you. But I would say ideally the time is that you should start in a class 11th because उसके अराउंड तक आपका क्लास 10th हो चुका होता है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की होती है एंड मैथमेटिक्स की भी होती है. एंड बेसिकली 2 इयर्स का टाइम काफी सफिशियंट होता है आपको करने के लिए. एंड या सो दैट्स ऑल. एंड बेसिकली आपको स्ट्रेस नहीं होना है कि कुछ स्टूडेंट्स ने आपसे बहुत पहले स्टार्ट किया तो वो डेफिनेटली आपसे बेटर होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स 9th एंड 10th से भी स्टार्ट करते हैं बट स्टिल वो सी लेवल पे होते हैं जिस लेवल पे कुछ स्टूडेंट्स 11th या 12th में स्टार्ट करते हैं. सो आई वुड से डेफिनेटली क्लास 11th इज द बेस्ट टाइम. बट even if you somehow don't start in a class 11th, but I would say start as early as possible. Then at least you should start in a class 12th, but
there would be a more pressure of class boards plus remaining syllabus of class 11th. So it might not be a better option, but so yeah. So I think class 11th is a better option. If I tell about my experience, what was this experience? So डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का बिकॉज ये आपको डेफिनेटली क्लास 10th में आप जिस लेवल पे होते हो एंड फाइनली जब आप उस चीज को क्रैक कर लोगे तो आप जिस लेवल पे होगे तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो गई होती है एंड आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे होते हैं एंड बेसिकली जब आप इसे क्रैक करोगे तो एक डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में और भी आगे जाने के लिए। सो दिस वाज द थिंग दैट आई लर्नड एंड I would say the journey might be a really stressful and many times you might feel that you should drop it, but at least I would say remember once why you even started this journey because you wanted to achieve, you wanted to be at some better place. So I would say at least keep some motivation to keep on moving because many people get stressed or depressed in meanwhile of the journey and they drop it and they drop their some really good thing for this small pain. So this is the 2 years of pain that that you should enjoy, and of course you won't be enjoying, but this would be exciting if you know what are the strategies required and how you can cope up with the pressure situation. So you definitely like this, and this would be a really great thing if you manage to reach to your destination. So yeah, I would say that this. हाँ या सो लास्ट का अगर आपके पास 3 मंथ है तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूँगा कि आप कुछ नया ट्राई मत ही करो तो ये बेटर है बिकॉज वो बेसिकली टाइम वेस्ट होगा एंड आप उस टॉपिक्स में उतना अच्छे भी नहीं रहोगे। सो बेटर ये है कि आप अपना जो प्रीवियसली आपने लास्ट 1 और 2 ईयर में जो भी कंप्लीट किया आप उससे बहुत और अच्छे से रिवाइज करो बिकॉज कुछ न्यू ग्रैब करने से अच्छा है कुछ एटलीस्ट आपने जो पहले ग्रैब किया हुआ है उसे और अच्छे से आप स्ट्रांगली ग्रिप कर सको। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 3 मंथ एंड I would say you should focus more on your solving skills rather than just learning more and more topics and reading the materials because in the exam hall you have to solve the questions rather than just reading the questions because the question won't be direct and you will have to solve those questions. So this is the thing, and if you have a last 1 month, so I'd say rather than focusing more on studies, better focus on your calmness and try to manage on your soft skills. That how can you be a cool during the pressure situation? How can you manage your time and how can you keep yourself motivated? Try to follow your healthy diet and at least keep hydrated regularly and for the last 2 months, the best thing is to solve the previous questions of JEE Advanced because whatever you can't do any great in the 1 month, but you can definitely do better if you try to solve the previous questions because those would help you to gain some motivation that you can if you are able to solve the previous year questions then you'll get some confidence that yeah I can solve the question of examination paper as well. So yeah, that is the thing. And meanwhile, once or twice in a week, you can also give mock test. So this would help you to manage your time and better analyze your performance. That what question you should strike first and what question you should try in a later. Yeah. So this is the. Yeah, so if I tell about monthly test, so basically जो क्लास के इन बिटवीन होते रहते थे उसमें एवरेज ही मेरा परफॉर्मेंस रहता था बहुत इतना हाई नहीं रहता था कि मैं 360 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे 340 प्लस आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं रहता था बट एवरेज अराउंड एवरेज या फिर अबव रहता था तो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता था बट डेफिनेटली लाइक मेरी सिस्टर्स ने भी बोला हुआ था कि रादर देन caring much about the result you should focus on your performance and you should try to improve for the next result. So it might be stressful that you are not getting the scores in your class test but
somehow you have to move on to the scores thing, because score is not going to help you, but your skills and your performance is going to help you. So that is the thing. And if you manage to improve your strategies, I would say that your performance will, uh, in the end, by the end of your 2 years of journey, your performance in the mock test will surely be better, because you have analyzed your all past 2 years of mock test, so you would be doing better in the upcoming mock test. So like by the end of my preparation, I was doing better in the mock test, and like for the full length of the test, I had a better score. So yeah, that was not stressful by the end of my journey. Yeah, so really that 2 years की जर्नी के बाद जब आप फाइनली उस चीज को कवर कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, एंड फाइनली आप ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस पे आते हो, तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल वन ऑफ द बेस्ट होता है। एंड आपके अंदर एक इंथुसियाज्म होता है कि लाइक आप वर्ल्ड में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा मुझे फील होता था कि जब मैं फर्स्ट टाइम कैंपस आया था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि आई एम समथिंग बेटर, बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो दिस वॉज द फील। एंड कैंपस के बाद जब आप बेसिकली मेन बिल्डिंग के सामने जाके फर्स्ट टाइम फोटो लेते हो, सो दैट वाज द ड्रीम फॉर एवरीथिंग। सो ऑलमोस्ट एवरीवन डज दिस, सो दिस इज द ड्रीम थिंग। एंड finally, about the campus, this is surely the one of the best thing among all the colleges in the India, because like starting from your classroom to your hostel rooms, almost everything is there in the campus. Your playgrounds, innovation labs, and innovation labs, and some practical labs, and a lot of lecture hall complexes, some surveys, and a lot of things are going. So that would definitely help you to grow all around apart from the studies as well. So this is surely a best thing, or this is the, I would say this is the best motivation that you should carry to do some better in your life. So this is the thing. And if I tell about seniors, so I'd say you would get some really best seniors of your life, because you might feel that your seniors would be rude. They would put some rules on you. They would ask you to behave in a manner, but that's not a thing. I personally feel like my senior are more like my friends, because I can talk to them just like a friend. If I need any help, I can just message them, and they would just tell you time when they are free, and you can approach them without any hesitation. So yeah, that's I would say. And senior are basically there for everything. If you have any academic problem, or if you have any problem related to your assignment, or your future, or your career, whatever guidance you want, they'll always be there to your help. So yeah, I would say there are some really best people in your campus life. So yeah, that's all my experience by now.